Assalamualaikum. Good evening from Zilka's favorite. Hope you all are doing well. After lesson 2, that was about the element of accounting, the first element asset. We have done it. Hope that's clear. Now, over to lesson 3. That's about the next element of accounting, and it will be very interesting for you. So, just over to slides. So let's start. The third element of accounting is liabilities. What are liabilities? Liabilities are debts or obligations that a business owes to others. They represent financial responsibilities that must be settled in future. It's very easy to understand that liabilities are actually the debts that the company has to pay. Let's suppose, for example, the company is going to purchase some of the goods, for example, furniture, for example, markers, for example, any of the goods in which it is dealing, right? It's they are not paying on cash. It's a credit sale. As I told you before, credit sale is the one that is working on billing, means the company is not paying for the goods at the moment, they will pay later. ऐसे समझें कि ये उधार की सेल है, क्रेडिट सेल है. कंपनी कैश पेमेंट नहीं कर रही, गुड्स उसने परचेज कर ली हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज कर लिया है, फर्नीचर आ गया है, एसेट आ गया है, ओके, बट उसकी पेमेंट लेटर ऑन करनी है. लेटर ऑन within that must be settled in future. जो future payment है, maybe it depends upon the deal, maybe after 1 month, 2 months, 3 months, it depends कि सप्लायर के साथ सेटलमेंट क्या हुआ है. तो ऐसी कोई भी पेमेंट्स जो लेटर ऑन करनी हो, ऐसी कोई भी सेल्स कंपनी की जो क्रेडिट सेल्स हों, उनको बोलते हैं लाइबिलिटीज़. इसमें कंपनी ओव करती है टू अदर्स, मीन्स कंपनी को पे करना है दूसरी कंपनीज को, सप्लायर्स को. दैट आर एक्चुअली द लाइबिलिटीज़ ओव टू अदर्स. When there is a word of oath to others, we must understand that here we are talking about liabilities, right? Now, just like assets, there are two types of liabilities. The first one, current liabilities, another one, non current liabilities. Let's talk about the first one, current liabilities. These are the debts or obligations that the business owes to others within the accounting period. So just listen carefully. These are the debts and obligations. Of course, here the company owes to others, right? Means the company has to pay to others. They have bought the goods, they have bought the items from the suppliers, but still they didn't pay. Means it's a credit sale. But they have to pay back, they have to clear the credit within accounting period. Within accounting period means accounting period can be of 3 months, of 6 months, of 1 year. So whatever the accounting period of the company, they have to pay their liabilities within this period. Means ये credit है short term credit, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का. जैसे हम अपनी गुड्स परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर में डील कर रहे हैं तो फर्नीचर परचेज कर लिया,
फर्नीचर आ गया बट पेमेंट जो है आफ्टर 1 मंथ, सप्लायर के साथ सेटलमेंट हुआ आफ्टर 1 मंथ करनी है। तो आफ्टर 1 मंथ कंपनी पे कर देगी, जब तक पे नहीं करेगी ये होगी उसकी लाइबिलिटी। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर उसने पेमेंट कर देना है, इसलिए इसको करंट लाइबिलिटी कहते हैं, क्योंकि ये है विद इन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस पेएबल, कंपनी के जो टैक्सेस होते हैं लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो ये अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होने से पहले पे कर दिए जाते हैं। सो टैक्सेस पेएबल आर ऑल्सो करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन्स कैन बी शॉर्ट टर्म, लोन्स कैन बी लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो विद इन अकाउंटिंग पीरियड पे कर दिए जाते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी से क्रेडिट उठाया कंपनी ने और परचेज की अपनी गुड्स, तो जो क्रेडिट उठाया वो उसे पे करना है विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, बट विद इन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर उन्होंने पे करना है, तो वो होगा उनका शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रेड पेएबल। If you remember, in assets we have done trade receivables, right? Now it is trade payable. Let's see what they are. Trade payable. Trade payables are liabilities when the goods or services are purchased on credit from suppliers. ट्रेड पेएबल्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं किसी कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर अबाउट द क्रेडिट सेल्स, दे आर अबाउट द क्रेडिट। ओके, ऐसी चीज़ें जो क्रेडिट पे परचेज की जाती हैं उनका अकाउंट बनाया जाता है ट्रेड पेएबल्स का, और ये पेएबल होती हैं विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। These are the credits from the suppliers that have to payable within accounting period. So these are called trade payables. पे करना है मीन्स क्रेडिट है, इसलिए इसको ट्रेड पेएबल बोलते हैं, और चूंकि पे करना है इट मीन्स दीज आर लाइबिलिटीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द करंट लाइबिलिटी इज accrued expenses. Now, what are accrued expenses? Let's see. Accrued expenses. These are expenses that have been incurred but not yet paid. Not yet paid. ऐसे expenses हैं जो हो चुके हैं, जो that actually happened but still not paid. इनको अभी पे करना बाकी है, जो कि विद इन अकाउंटिंग पीरियड ही पे कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज देयर आर वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्किंग इन अ कंपनी। ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ द मंथ द कंपनी हैज़ टू पे सैलरीज और वेजेस टू देम। पूरा महीना एक्सपेंस तो क्रिएट होता रहा, उनकी वेजेस कैलकुलेट होती रही, उनकी सैलरीज कैलकुलेट होती रही, बट पे कब किया जा रहा है? एट द एंड ऑफ द मंथ बिफोर अकाउंटिंग पीरियड. So these are accrued expenses, means the expenses that actually happened but not calculated yet, right? Next, there are rent, utilities. Rent or utilities, these are actually also happened. हाउ? बिल्डिंग का रेंट पूरे महीने उसकी कैलकुलेशन होती रहती है, रेंट पड़ता रहता है। यूटिलिटीज़ लाइक वी हैव द बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस बिल्स एट्सेट्रा, तो बाय द मंथ कैलकुलेट होता रहता है बट पे एट द एंड ऑफ द मंथ किया जाता है, right? So these are also accrued expenses, means the expenses that actually have happened but yet we have to pay. And the payment must be within accounting period. एट द एंड ऑफ द मंथ पे कर दिया जाएगा। जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जो रेंट हैं, जो सैलरीज हैं, जो वेजेस है, ऐसा तो नहीं है कि इस महीने नहीं किया
2 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे, या आफ्टर 1 ईयर कर लेंगे, मीन्स आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा तो नहीं होता। दे मस्ट बी पेड विद इन अकाउंटिंग पीरियड. सो accrued expenses that we have to pay within accounting period, these are called, these are also calculated as current liabilities, right? Get back to the lesson. Current liabilities are clear over here. Now we have non current liabilities. As it's clear by the name, non current means it's opposite to the current liabilities. Non current liabilities, let's read, these are the debts or obligations that the business owes to others and can be paid after accounting period. Look, here is the difference. These liabilities can be paid after accounting period. These are long term liabilities. So, these are actually such liabilities that we can pay after the accounting period. इसीलिए इनको long term liabilities कहा जाता है. Means इनका duration period ज़्यादा होता है. Duration period exceed कर जाता है accounting period से. Accounting period that can be of 3 months, 6 months, 1 year, depends upon the policy of the company. तो इससे ज़्यादा इसके बाद जो पेमेंट्स हमारी ड्यूज़ होती हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो डील में होती हैं, दैट दे विल बी पेड आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड. Such liabilities are called long term liabilities. For example, we have long term loans. As I told you before, in current liabilities, there were short term loans. तो जैसा शॉर्ट टर्म लोन्स थे जो कि विद इन अकाउंटिंग पीरियड पे बैक करने होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आर ऑपोजिट. वी हैव टू पे देम बैक आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड, राइट? वी हैव टू पे देम आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड मीन्स इन लोन्स की ड्यूरेशन मोर देन अकाउंटिंग पीरियड होती है. ओके, इट कैन बी मोर देन 6 months, मोर देन 1 year. तो इनको पे करना होता है आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड. दैट्स वाई दीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बैंक लोन्स. नाउ व्हाट आर बैंक लोन्स एक्चुअली? Bank loans, it's a finance borrowed from the bank for more than 1 year. इधर उधर से लोन्स तो ले रहे थे हम ऑलरेडी. दैट वाज लाइक शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन. बैंक लोन्स बैंक से बोरो किए जाते हैं. दीज लोन्स आर बोरोड फ्रॉम द बैंक एक्चुअली. फाइनेंस मीन्स कैश, मनी. इट कैन बी बोरोड फ्रॉम द बैंक फॉर मोर देन 1 year. उसकी सेटलमेंट होती है बैंक के साथ कि ये आफ्टर 1 year पे किया जाएगा एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट. कुछ उसका इंटरेस्ट लेता है बैंक, कुछ रेशो लेता है ऊपर, और आपका लोन सेटल होता है. बट दैट the duration of such loan is actually more than accounting period. That's why it is called long term loan. Long term, you can say the long term liability that's included in non current liability portion, right? So I hope the types of the liabilities are clear. Assets and liabilities, there is the only difference is that assets are the things that the company owned and liabilities are the things that company owed to pay. So there is the difference of ownership and the owe. So just remember these and the elements will be very clear to you. These are the basic foundation of accounting. So if the elements of the accounting are clear to you, then accounting will be very easy and interesting for you. I hope the lesson today was interesting and very easy. Just practice it and learn the terms, note them down. These are very important as exam notes. And we will meet soon with the next lesson. Take very good care of yourself. Have a nice day. Thank you. Allah Hafiz.